Hello and welcome back to Ganga Education. On this platform, you will find quality lectures relating to the field of law, competitive examination in legal domain, important legal facts and legal history, all explained in clear and structured manner. Welcome to Ganga Education Capacity to Contract. Hello everyone and welcome to this premium exam focused explainer. आज हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक बिल्कुल फाउंडेशनल पिलर डिस्कस करने वाले हैं, कंसेंट और कैपेसिटी। सोचिए जरा, अगर एक पार्टी लीगली कॉम्पिटेंट ही नहीं है तो उनका कंसेंट वैलिड कैसे होगा? और बिना वैलिड कंसेंट के कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, राइट? इसलिए आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शंस 10 से 12 तक को बिल्कुल डेप्थ में डिकोड करेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। Okay, let's dive into this roadmap. आज के इस एक्सप्लेनर में हम कवर करेंगे कैपेसिटी बेसिक्स, द साउंड माइंड टेस्ट, इंडियन वर्सेस इंग्लिश लॉ, पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड, कुछ लैंडमार्क केसेस एंड एआई, और आखिर में एक क्विक एग्जाम रिवीजन। Section 1. Capacity Basics. The Pillar of Free Consent. यहाँ हम बैरैक्ट की एग्जैक्ट लैंग्वेज देखते हैं। सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लियरली 3 कंडीशंस प्रिस्क्राइब करता है एक इंसान को कॉम्पिटेंट बनने के लिए। फर्स्ट, एज ऑफ मेजॉरिटी, सेकंड, हु इज ऑफ साउंड माइंड, एंड थर्ड, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। हिस्टोरिकली कॉमन लॉ से आते हुए ये रूल्स इसलिए बनाए गए थे ताकि वल्नरेबल पार्टीज का शोषण ना हो। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा मेन फोकस इन लास्ट 2 कंडीशंस पर रहेगा, साउंड माइंड और नॉट डिस्क्वालिफाइड, क्योंकि सच बताऊं तो यही वो एब्सोल्यूट लीगल थ्रेशोल्ड्स हैं जिन पर एग्जाम्स में मैक्सिमम ट्रिकी केस लॉज और क्वेश्चंस बनते हैं। Section 2. The Sound Mind Test. Decoding Section 12. तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोर्ट क्या देखता है, एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए या लीगल टेस्ट? वेल, सेक्शन 12 इसको परफेक्टली डिफाइन करता है एक लीगल टेस्ट के थ्रू। लॉ कहता है a person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes it he is capable of understanding it and of forming a rational judgment। यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जरूरी बात यह है कि लॉ एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को देखता है। मतलब अगर किसी को सीवियर फीवर है या वो टेम्पररीली इंसेन है सिर्फ उसी एक मोमेंट पर, तो वो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, भले ही बाकी टाइम वो बिल्कुल हेल्दी और नॉर्मल हो। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि ये दोनों स्टेप्स एक ही वक्त पर सेटिस्फाई होने चाहिए। स्टेप 1, आप कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स समझ पा रहे हैं, और स्टेप 2, आप एक रैशनल जजमेंट फॉर्म कर पा रहे हैं कि इसका आपके पर्सनल इंटरेस्ट पर आखिर क्या असर पड़ेगा। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। अगर एक हाईली इंटॉक्सिकेटेड इंसान अपना घर बहुत ही सस्ते में बेच रहा है, हो सकता है उसे पता हो कि वो एक सेल डीड पर साइन कर रहा है, यानी स्टेप 1 क्लियर है, बट हिज माइंड इज लिटरली टू क्लाउडेड टू रियलाइज द ह्यूज फाइनेंशियल लॉस, जो कि स्टेप 2 है। यहां पर लॉ मानेगा कि कैपेसिटी मिसिंग है। चलिए अब टाइप्स ऑफ अनसाउंडनेस को क्विकली देखते हैं। ये कीवर्ड्स एग्जाम के लिए बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। आइडियासी एक परमानेंट मेंटल डिफिशिएंसी होती है, तो यहां अग्रीमेंट हमेशा से वॉइड रहेगा। फिर आता है लुनेसी, जो एक मेंटल डिजीज है, पर इसमें लूसिड इंटरवल्स होते हैं, मतलब वो पीरियड्स जब पेशेंट मेडिकली स्टेबल और कंप्लीटली सेन महसूस करता है। एक लुनैटिक अपने लूसिड इंटरवल के दौरान परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, पर ध्यान रहे कोर्ट में इसको प्रूव करने का बर्डन काफी हैवी होता है। फिर आती है ड्रंकननेस, जहां टेम्परेरीली आपका जजमेंट क्लाउड होता है, और मेंटल डिके, जो एक्सट्रीम ओल्ड एज या सिवियर इलनेस की वजह से होता है। Moving right along to Section 3. Indian versus English Law. A critical jurisprudential distinction. आपको पता है ये स्पेसिफिक एरिया जुडिशरी एमसीक्यूज का सबसे फेवरेट ट्रैप है, एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द स्ट्रिक्ट प्रोटेक्टिव नेचर ऑफ इंडियन लॉ। इंडिया में एक पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है, यानी शुरुआत से ही शून्य। दूसरी पार्टी को उसकी इंसैनिटी के बारे में पता था या नहीं, ये टोटली इरेलीवेंट है। इसलिए अगर कोई बेनिफिट पास हुआ है तो हमें रिलेटेड डॉक्ट्रिन्स को देखना पड़ता है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 65, जहां बेनिफिट्स वापस रिस्टोर करने पड़ सकते हैं। लेकिन इंग्लिश लॉ एक अलग अप्रोच लेता है। वहां कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है और इनसेन पर्सन को प्रूव करना पड़ता है कि दूसरी पार्टी को उसके कंडीशन की नॉलेज थी, जैसा कि फेमस इंपीरियल लोन कंपनी वर्सेस स्टोन केस में रूल आया था। टू पुट इट सिंपली, इंडियन लॉ वल्नरेबल लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए एब्सोल्युटली स्ट्रिक्ट बन लगाता है। Section 4. Persons disqualified. Statutory bars to contracting. अब हम आते हैं उन मेन कैटेगरीज पर जिन्हें लॉ स्ट्रिक्टली डिस्क्वालीफाई करता है, जैसे वॉर के दौरान एलियन एनिमीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता।
इंसॉल्वेंट्स की कैपेसिटी प्रैक्टिकली खत्म हो जाती है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी ऑफिशियल असाइनी के पास चली जाती है। सेम गोज फॉर कन्विक्टेड प्रिजनर्स जिनकी प्रॉपर्टी फोरफिट हो गई है। उसके अलावा फॉरेन सॉवरेन्स और एम्बेसडर्स को इम्यूनिटी मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉर्पोरेट लॉ का रूल। कॉर्पोरेशंस, देखिए, एक कंपनी ज्यूरिस्टिक पर्सन है। अगर वो अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिमिट से बाहर जाकर कोई अग्रीमेंट करती है तो वो एक्ट अल्ट्रा वायरस कहलाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट सिंपली वॉइड होता है क्योंकि उनके पास लीगल कैपेसिटी ही नहीं होती। Section 5. Landmark Cases and AI. Applying the law to reality. ये आपके एग्जाम के लिए एक बहुत बहुत क्रूशियल केस है, इंदर सिंह वर्सेस परमेश्वरधारी सिंह 1957। इस केस में एक्चुअली क्या हुआ था कि एक व्यक्ति जो मेंटली थोड़ा अनफिट था, उसने अपनी 25,000 रुपए की प्रॉपर्टी सिर्फ 7,000 रुपए में बेच दी। कोर्ट ने इस ग्रॉस इनएडिक्वेसी ऑफ प्राइस को केयरफुली देखा और डिसाइड किया कि सेलर के पास इस ट्रांजैक्शन को समझने और एक रैशनल जजमेंट फॉर्म करने की मेंटल कैपेसिटी थी ही नहीं, इसलिए ये सेल स्ट्रिक्टली वॉइड डिक्लेयर कर दी गई। Now what's really interesting about the famous Ashbury Railway case of 1875 is कैसे एक बड़ी कंपनी अपने खुद के चार्टर रूल से डिस्क्वालीफाई हो सकती है। कंपनी का प्राइमरी बिजनेस रजिस्टर था रेलवे कैरेजेस और आयरन प्लांट बनाना, पर उनके डायरेक्टर्स ने एक अग्रीमेंट कर लिया बेल्जियम में एक रेलवे लाइन फाइनेंस करने का। कोर्ट ने स्ट्रिक्टली कहा कि फाइनेंसिंग का काम उनके रजिस्टर्ड ऑब्जेक्ट्स के कंप्लीटली बाहर है, ये अल्ट्रा वायरस है, इसलिए कंपनी लैक्ड लीगल कैपेसिटी और वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली वॉइड माना गया। और दोस्तों, लॉ सिर्फ पास्ट की बात नहीं करता, फ्यूचर की भी करता है। आज के इस डिजिटल एज में ये सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा रेलेवेंट हैं। सोचिए, अगर एक यूजर कॉग्निटिवली इंपेयर्ड है, इंटॉक्सिकेटेड है या टेम्पररी इंसैनिटी में है और वो ई कॉमर्स साइट पर क्लिक रैप अग्रीमेंट पर अग्री प्रेस कर देता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के पास अभी तक सेक्शन 12 का साउंड माइंड वेरीफाई करने का कोई रिलायबल तरीका नहीं है। या फिर अगर कोई एआई बॉट किसी इनकैपेसिटेटेड ओनर के बिहाफ पर ऑटोमेटिकली ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वहां कैपेसिटी का टेस्ट आखिर कैसे अप्लाई होगा? ये हमारे लीगल सिस्टम के सामने आने वाले इमर्जिंग कंटेम्पररी चैलेंजेस हैं, एंड दे आर एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग। Finally, we reach Section 6. Quick Exam Revision. Master Matrix for Sections 11 and 12. स्टूडेंट्स, अपने डिवाइसेस रेडी रखिए और इस मास्टर मैट्रिक्स का जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए रिवाइज करते हैं। सेक्शन 11 बात करता है कॉम्पिटेंसी की, मेजॉरिटी, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड। एशबरी रेलवे केस याद रखिएगा। सेक्शन 12 डील करता है साउंड माइंड के डेफिनेशन से, कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड प्लस रैशनल जजमेंट। यहां इंदर सिंह केस इंपॉर्टेंट है और ज्यूरिस्प्रूडेंस का सबसे मेन डिफरेंस, इंडियन लॉ में इफेक्ट हमेशा वॉइड एब इनिशियो होता है, यानी एब्सोल्यूट, जबकि इंग्लिश लॉ में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, जहां इंपीरियल लोन कंपनी वर्सेस स्टोन का नॉलेज रूल लगता है। सिंपल, राइट? तो आज का ये एक्सप्लेनर एंड करने से पहले मैं आपको इस थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन के साथ छोड़ना चाहता हूं। जैसे जैसे हम ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां सिस्टम्स ऑटो एग्जीक्यूट होते हैं, क्या एक एआई बॉट एसेंशियली लॉ के सेक्शन 12 के मुताबिक सच में एक रैशनल जजमेंट फॉर्म कर सकता है? थिंक अबाउट इट। आपके क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। फॉर मोर सच लॉ लेक्चर्स, सब्सक्राइब टू गंगा एजुकेशन, कीप लर्निंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। Welcome to this Ganga Education Premium Explainer. आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। If you're gearing up for your LLB, judiciary, or NET/SET exams, you already know that problem questions can be a bit of a maze. But don't worry. Today we're going to break down two highly critical judiciary level problems focused entirely on the capacity to contract. We are bringing a strictly professional exam-oriented approach to this, so let's dive right in. So, here's our game plan for today. First up, we'll tackle problem 1, which deals with an unsound mind. Then, we'll pivot to problem 2, focusing on corporate ultravirus. And finally, we'll wrap it all up with a rapid revision and some top-tier exam tips to help you secure those maximum marks. All right, let's jump straight into problem 1, contract by a person of unsound mind. Now, picture this scenario because it's an absolute favorite among examiners. Dhyan se suniye. We have A, who is legally a lunatic under medical treatment. One day, he actually escapes from the hospital, heads back to his hometown, and decides he is going to sell his self-acquired registered flat. He even goes as far as issuing a public notice. Enter B, a totally innocent buyer. He sees the notice, pays the full asking price, and gets the property officially registered in his name. So the exam is going to throw this at you. Is the sale valid, and can A's legal heirs claim that property back later? On the surface, B looks completely blameless, right? I mean, he paid the money and did the paperwork. Let's break down what the law actually says.
Before your pen even hits the paper on the exam, you have got to frame the legal issues. We're looking at two main things here: the contractual capacity of a person of unsound mind, and whether simply paying money and registering a deed can somehow magically fix a defective contract. And hey, quoting the exact sections is absolutely mandatory if you want top marks. You need to hit them with Section 10, which mandates that contracts require competent parties. Then connect it straight to Section 11, which explicitly demands a sound mind. And finally, Section 12, which actually defines what a sound mind is, including this crucial concept of a lucid interval. Now, here's where Indian law is fascinatingly strict. Over in English law, sometimes these contracts might be considered voidable, depending on the circumstances. But Indian law? No way. It is absolute. An agreement with an incompetent person is void ab initio, meaning it is a complete nullity right from the very beginning. The logic is actually beautifully simple. The person lacks the legal will to enter into an agreement. Zero legal will equals zero legal contract. To really solidify your answer, you need to drop a landmark judgment. An Inder Singh versus Parmeshwar Adhari Singh from 1957 brilliantly illustrates our exact point. In the specific case, a person of unsound mind sold a property worth 25,000 rupees for a measly 7,000. The court stepped right in and ruled the sale absolutely void, simply because the seller was completely incapable of understanding how this transaction affected his interests. If you cite this case in your judiciary exams, it proves to the examiner that you understand the real-world application of Section 12. So, how do you structure this on your answer sheet? Always use the IRAC method. Let's walk through the application step by step. Step 1. The facts clearly state A is a lunatic under treatment. Step 2. Under Section 12, he can only make a contract during a lucid interval, like a temporary window of sanity. But wait, he's an escaped patient. There is absolutely zero proof of a lucid interval here. Step 3. Pulling in Section 11, A is legally incompetent. Step 4. Under Section 10, without competence, the agreement is void. And finally, Step 5. Answering our second issue, mere payment and registration cannot breathe life into a dead, void agreement. Arriving at our definitive legal conclusion for problem 1, the sale transaction is absolutely 100% void. Even though B paid in full and registered the property in total good faith, under Indian law he acquires no legal title whatsoever. As a direct result, A's legal heirs are fully entitled to claim the property back. It might seem harsh on B, but the law prioritizes protecting the vulnerable, incompetent person over the commercial loss of the buyer. Go ahead and take a quick mental screenshot of the rapid revision table. This is your cheat sheet for problem 1. Remember the power trio of sections 10, 11, and 12. Remember the Inder Singh case. And most importantly, keep in mind that the burden of proof to show a lucid interval rests entirely on the person trying to enforce the contract. In our story, that would have been B, and he had no proof. Moving right along, let's shift gears to problem 2, corporate capacity and ultra-vires. This next scenario is a classic university exam trap that confuses a ton of students. Let me tell you the story of Mr. Rashett. An incorporated company is set up with one very specific objective: financing passenger cars. However, the company's directors go rogue and sign a massive agreement to finance Mr. Rashett's construction of a railway line in Belgium. Now here's the twist that tricks everyone. The majority of the company's shareholders actually hold a meeting and ratify or approve the director's decision. But later on, the company backs out and repudiates the contract. Mr. Rashett sues. Does he win? Let's see. The legal issues here totally shift from medical sanity to corporate boundaries. Does the company actually have the legal capacity to contract outside its memorandum of association? And, more importantly, does getting the shareholders' stamp of approval suddenly make it valid? To answer this, we look back at Section 11, but this time we focus on a completely different phrase. Section 11 states, a party must not be disqualified from contracting by any law to which he is subject. And that brings us to the famous doctrine of ultra-vires. Ultra means beyond, and virus means powers. Remember, a company is a juristic person. It doesn't have a human brain. Its mind and its legal capacity are strictly fenced in by its registered objects, its memorandum of association. Any act that steps outside this fence is an act performed by a person disqualified by law, making it absolutely void. If the facts of our problem sounded a bit familiar, it's because they are pulled directly from one of the most legendary cases in corporate and contract law history: Ashbury Railway Carriage and Iron Co. versus Rich from 1875. In this case, the court clearly established that contracts beyond a company's objects are ultra-vires and void. And here is the absolute kicker.
Even if every single shareholder ratifies the contract, it remains void. You simply cannot validate an act that, legally speaking, never actually existed. Let's run this through our 5-step legal reasoning process. Step 1. The company's registered object is financing passenger cars. Step 2. The disputed contract is for a railway line, clearly a massive mismatch. Step 3. By applying the doctrine of ultra-virus, the contract completely exceeds their legal capacity. Step 4. The shareholder's ratification is legally totally useless. You cannot ratify a void act. Step 5. Therefore, the contract was made by a party disqualified by law. So our final answer for problem 2 is crystal clear. Mr. Ritchie cannot succeed. The contract is void and ultra-virus. The company backing out or repudiating the contract is legally completely justified because in the eyes of the law, no valid contract was ever formed in the first place. It's like the deal never even happened. Here is your rapid revision table for problem 2. For any corporate capacity problems, you've got to tie Section 11's disqualified by law clause straight to the Ashbury Railway case. Always emphasize that the legal effect is ultra-virus and void, and explicitly mention that shareholder ratification has absolutely zero validating power here. Let's wrap things up with Section 3, rapid revision and exam tips. Listen up, because here is a premium judiciary exam tip that absolutely separates the average answers from the top percentiles. When you write your conclusion, never just lazily say a contract is void. You need to use the precise legal terminology. Say it is void ab initio. Furthermore, always show the examiner your exact chain of logic. Explain that because capacity is missing under Section 11, the fundamental foundation of Section 10 completely fails. That exact level of precision is what examiners are hunting for. We've seen how absolute incompetence protects the lunatic and restricts the corporation. But I want to leave you with this kind of wild, provocative thought. If absolute incompetence makes a contract totally void ab initio, what happens if a minor, who is also technically incompetent under Section 11, intentionally and fraudulently lies about their age to get someone to sign a contract? Does the law still protect the fraudster? Well, keep those legal gears turning, maybe research the principle of estoppel, and we will decode that exact mystery in our next Ganga Education Explainer. Keep studying, and I'll catch you next time. Thank you for watching this session. If you found this lecture useful, do like, share and subscribe to Ganga Education. Keep learning, keep growing and stay connected for more law lectures.